Well, good morning to all of you. I'm Dr. Naresh AGGRWAL going to represent a very beautiful essay, The March of India, composed by Dr. RADHAKRISHANAN, a crown of not only of India but of the whole world. Dr. RADHAKRISHANAN, an eminent educationist, statesman, thinker, writer, and orator, was born in 1888 in Tirutani in the state of Tamil Nadu, the erstwhile Madras Presidency. After completing his MA in philosophy from Madras Christian University in 1908, he became a professor in Presidency College, Madras. He taught in various other universities and built a reputation for knowledge and oratory. He delivered the town lectures at Oxford and Chicago too. He served his country in various capacities. After becoming Vice Chancellor of the Banaras Hindu University and the Chairman of the University Committee, he became Ambassador to USSR. Thereafter, he served as Vice President of India from 1952 to 1961 and President from 1962 to 1967. His first book, The Ethics of the Vedanta and its Metaphysical Presupposition, establishes him as a philosopher. In India, his birth is celebrated as Teachers' Day. His books include the philosophy of Rabindranath Tagore, Indian philosophy, the Hindu way of life, the reason we need, freedom and culture, and religion and society. They show the wide range of the variety of his reading and vast experience of knowledge. His speeches are noteworthy for their wide preciseness, argumentative, and flowing style. So here, let me start in detail about the essay of the great eminent philosopher. In the present essay, Radhakrishnan discusses the problems of India after independence and lays stress on a balanced growth of the individual through education. He proposes that the responsibility lies over the universities for training the youth and to teach them to approach the problems of life with fortitude, self-control, and the sense of balance which the new conditions demand. He cautions students to adopt a purpose in life. Studying science and technology, along with the moral values and classical works, results in better intellectual training and independent thinking. He shows that building character and spiritual growth and sense of unity towards rebuilding the nation are the greatest asset of nation. Only such enlightened spirits can provide a better future to the nation. No doubt, political freedom has brought us a great opportunity. It has brought us the sacred responsibility of building up a new nation, which will be free from want and disease and the curse of caste and greed. Our country is passing through a great revolutionary period in human history. It is facing a many-sided challenge, political, economic, social, and cultural. Education is the means by which our youth can be trained to face this great challenge and build the new India of our dreams. Dr. Radhakrishnan believes that the scientific and technological study develop in us an attitude of tolerance, freedom from prejudices,
and hospitality to new ideas. Only by developing our mind and heart and intelligence and our own moral values, we can save the world from total destruction. If we do so, science can lead us to such a degree of material wealth as has now before been possible in human history. But this will be possible only if we develop our moral values and take the right judgment. In his eyes, the real aim of education, any satisfactory system of education, should aim at balanced growth of individual. It should insist on both knowledge and wisdom. It should not only train the intellect but also bring grace into the heart of man. Wisdom is more easily gained through the study of literature, philosophy, and religion. The study of these subjects helps us to understand the higher laws of the universe and the face of the difficult problems of life. However, indifference to our culture is mainly responsible for the increased unrest among the students in universities. Unless the students develop a sense of self-control and a self-balance, they become a danger to themselves and to society as a whole. Moreover, a university is essentially a corporation of teachers and students. The kind of education that the students receive will depend on quality of the teachers. The university teachers must be paid well so that they may be able to devote themselves to learning, teaching, and research work. Magnificent buildings and equipments are no substitute for great teachers. In the absence of competent teachers, it is impossible for the students to get adequate academic tuition or moral guidance. Our future destiny as a nation depends on our spiritual strength rather than upon our material wealth. The goal of perfection can't be reached by weak and spirit. The greatest asset of a nation is the spirit of its people. If we develop the spirit of people, our future will be bright. Dr. Radhakrishnan remarks that there is no revolutionary power among people of our country at present. There is only a spirit of enjoyment. There is no spirit of sacrifice. We seem to demand more than what we give. There is kind of spiritual likeness among our people. We have to overcome this spiritual likeness and work hard for the country. If we become learned without getting truly cultured, we become a danger to society. We become like demons and we may bring destruction to the world. It is wrong to assume that scientific discovery and technological improvement alone can bring about the betterment of mankind. We have placed too much emphasis on scientific training. We have to rectify this mistake and develop the basic values of the spirit. Thus, in a nutshell, we see that the essay reveals Dr. Radhakrishanan's love for our country and his concern to give the right kind of education to the young man and woman of our country. Actually, he wanted to uplift our country to world level. So, प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, डॉक्टर राधा कृष्णन के ऊपर ये बहुत सुंदर लेख है, द मार्च ऑफ माइंड बाय डॉक्टर राधा कृष्णन. मार्च हियर स्टैंड्स फॉर प्रोग्रेस. राधा कृष्ण बहुत ही प्रमुख ख्यातिवान शिक्षाविद, राजनेता
पब्लिक ऑरेटर और भारत के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए महामहिम राष्ट्रपति जी, और ऐसे हुए जिनको ये कालजयी पात्र हैं, जिनको समय भुला नहीं पाएगा और आने वाली सभी पीढ़ियाँ इनकी किताबों के माध्यम से, इनकी शिक्षाओं के माध्यम से मार्गदर्शन प्राप्त करती रहेगी। इस लेख में भारत की प्रॉब्लम्स को वो डिस्कस करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो प्रॉब्लम्स आई उनके ऊपर विशेष रूप से स्ट्रेस डाल के कहते हैं, और उनका मानना था कि जब तक व्यक्तिगत रूप से हम अच्छे शिक्षित नहीं होंगे, हमारे माइंड का विकास नहीं होगा, हमारा नैतिक विकास नहीं होगा, तब तक हमारा देश भी विकसित नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा नीति हो, हमारे यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स की बहुत अच्छी सैलरी हो, तभी वो रिसर्च वर्क, गुणवत्ता वाला कार्य प्रदान कर पाएंगे। मात्र अकेला दीवारें, टूल, ये कोई अच्छे टीचर का सब्स्टिट्यूट नहीं है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हमें हमारे जीवन में उतारना है, इन्होंने समझाया है। यही बात स्वामी विवेकानंद ने भी कही थी। हमारे जीवन में मॉरल वैल्यूज़ को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, क्लासिकल वर्क्स को इतना उतार लेना है, आत्मसात करना है, और उसी समय हमें मॉरल वैल्यूज़, हमें भारतीय कल्चर भी हमारे चरित्र में समाहित करनी है। हमें चरित्र निर्माण करना है, एक बहुत स्पिरिट, आत्मा का विकास करना है, एक बहुत ही संवेदनशील मन, मस्तिष्क, और एक इसी प्रकार का हमें आगे मानसिक धरातल आगे भी प्रदान करना है। राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, और उन्होंने इन प्रॉब्लम्स को शिक्षा के माध्यम से दूर करने का बीड़ा उठाया और किया भी। हमारे सामने बहुत सारे चैलेंज थे, पॉलिटिकल चैलेंज थे, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर, सब प्रकार को उन्होंने कहा कि एजुकेशन जो सब जगह सही मायने में फैल जाएगी, सब लोग शिक्षा को बोझ ना समझ के आत्मसात कर लेंगे। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंग्लिश, इंटरनेशनल लैंग्वेज, टेक्नोलॉजी को जब हम सीखेंगे, हमारा सबका विकास होगा, तभी हमारे भारत का विकास हो पाएगा। शिक्षार्थी, टीचर्स का हमारे जीवन में बहुत बड़ा एक रोल है। हमें शिक्षा केवल अपने कार्य व्यवसायिक क्षेत्र तक सीमित नहीं रखनी है, हमें अपना विकास करना है, अपने समाज का नव निर्माण करना है, राष्ट्र का नव निर्माण करना है। हमें अपने आज के इस समाज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाके फैलाना है। आदरणीय मोदी जी भी यही बात कह रहे हैं, लोकल टू ग्लोबल। लेकिन ये कब संभव होगा? जब हम पहले स्वयं बहुत अपने मन, समस्त कर्मेंद्रियों को काबू करके आत्मा के तेज को इतना तेज़ करें, और साइंस, टेक्नोलॉजी, शिक्षा को इतना आत्मसात कर लें। हर फील्ड में, ट्रेड, कॉमर्स, आर्ट्स, सब फील्ड में, इंडस्ट्रियल सेक्शन में, व्यापार में इतना तरक्की कर लें कि हमारा स्थानीय कार्य अंतर्राष्ट्रीय कार्य बन जाए। इसी चीज़ की इन्होंने हमें बहुत कहा था। लेकिन इनको एक बात का दुख था कि उस समय के भारतीय लोग केवल आनंद के अंदर आनंद उठाने में अपना उद्देश्य समझते थे, आनंद पान करने में। उनकी बलिदान करने की, त्याग करने की, राष्ट्र के लिए से त्याग की भावना नहीं थी। उस समय बहुत कम काम करना चाहते थे, बदले में बहुत ज़्यादा आउटपुट चाहते थे। इस बातों से उनको थोड़ा आगे का रास्ता मिला कि मुझे भारतीय समाज को सुधारना है, और उन्होंने काफ़ी हद तक सुधारा भी। आज हम उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।